Hey guys, Rom Gurji here, back with another video, and this time I'm going to talk about how India and the COVID pandemic changed the mobile industry. Now, before we do that, if you're new here, press that subscribe button and the bell icon for all the notifications. And अगर आपको ये वीडियो हिंदी में देखना है तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे जाके आप ये वीडियो हिंदी में भी देख सकते हैं. So, let's get started. So talking about the Indian mobile landscape, so let's rewind back when the Galaxy Y series came out. So I still remember I was very young that time. I was a kid, and Galaxy Y was all the rage. Okay, everybody wanted that Android phone that Samsung just released, and it was so much more better. I remember having a Sony Ericsson phone with a beautiful camera for that time. It had a dedicated shutter button, etc. But it had that T9 keypad where you had to A, B, C with one key, C, D, E with another key, that those kind of things, right? So you had to do all of that to actually get a message. But these cool kids with Galaxy Y and all those super rich kids with their Blackberries, they were in a different league altogether. They were texting on something known as WhatsApp, and I had no idea what WhatsApp was, right? Up until the class 10th, I did not have an Android phone. So yeah, it was a different era that time, and Samsung had totally changed the game. So everybody wanted to go to buy these phones, but they were costly. They were costly for what they were offering, and this changed with a small player. And when I say small, this player was really small. It became big, died down later. But this very small player, Micromax. So what happened was we used to go to these parent-teacher meetings after every exam, and once when we had gone, there was this small tent with the salespeople from Micromax selling their Android tablets for studying. And I kid you not, they were on the road, they had put this small sales tent and they were pitching the tablet to a lot of parents, and they were selling it just for 4,000, which was something which was not expected you would be paying for an Android tablet. So that is when Micromax entered the market, and soon Lava, Carbon, etc., followed, and they started making these large size, Canvas series, and then Panasonic came with Eluga series. Carbon also had a huge phone which basically was very bad. But yeah, what actually happened was the game got changed. Samsung was still the top because they were the first ones to come out with a good Android phone, and they continued their journey with Android. And then there was obviously Apple. So if you don't know, Apple did come to India pretty fast. It's not that it came very late, but then it was not that accessible. It still isn't very accessible, but at that point of time, it was so inaccessible. It was only with people whose relatives were in Canada or Dubai or somewhere, and they used to get an iPhone for them, and then it would be like a very big thing. Okay, we have an iPhone in the family, kind of a thing. But things soon started to change as far as India was concerned. See, India is a mass market, right? Here, your customer is not buying one product, your customer is buying 10 products. How? It's a mass market. So if I buy, I'm going to tell one person about it, the other person, and the population is so much that your sales are going to go up if I talk about your phone. But will I talk about your phone if I can't afford it? That is where these Chinese players entered, right? They wanted a shock and awe feature. They wanted to tell the Indian customers that okay, whatever you are currently buying, you can get better but at a lower price. That is also when OnePlus entered, and it's a Chinese company, just in case you're wondering. And OnePlus came out with their OnePlus One, and it shook the markets. As far as India went, I saw my friends crazily scurrying around to find that one invite for that phone, which was amazing when you compared it to Apple, when you compared it to, let's say, Samsung and Nexus. All of these phones did not matter in front of the OnePlus phones because they were providing so much hardware for so little of the price, and they had Cyanogen mod. I mean, I have broken phones trying to get Cyanogen mod in them. Trust me. So yeah, this is how it happened. And then the Chinese players said, okay, cool, let's give the Indian people what they want. They want value for money. They're frugal with money, so we're going to make it cheaper. And how are we going to make it cheaper? We're going to do cost cutting in materials somewhere, but we're going to give the main hardware good.
So that is where all of these Chinese players started getting their strongness. Now, if you have observed OnePlus, when it originally launched, it was a genuine flagship killer. And when I say genuine, it costed so cheap for the hardware it was offering, it was baffling for people. The tech reviewers were totally baffled by the fact that they were offering so much for so little. So it was very cool, very interesting. And then we had Xiaomi come with their Redmi series, right? I remember buying a Redmi Note 5, and yeah, it is different. So whatever you're getting in Samsung for that price, you're going to get so much better in Xiaomi for the same price. With all of these things happening, Samsung, Google, for example, Nexus, and then we have Apple, all of these players, they started changing how they're working, right? They started changing how they function. If you've observed, Apple earlier provided to only a few sections of the market, but now Samsung provides to every section of the market. You want the cheapest Android phone to the costliest Android phone, Samsung has you covered. In fact, it's not just Samsung. Nokia earlier, when they came out with their Lumia series, they failed with Microsoft. So the company went on some kind of haiku, was bought by another company, and slowly, somewhere they changed and they made a comeback. And now even Nokia covers all the sectors of the market. Now we still have these big players like Apple, right? And you would say, okay, Apple is not that accessible, but look at it. Apple earlier used to be only accessible to the elite, but now Apple is actually accessible to, well, the middle class, at least, with their SEs and their XR and their iPhone 11 coming from a much cheaper rate. There has been a lot of changes, and these changes, to be very honest, are something that showcase how the Indian market has changed the beliefs of these big brands. A lot of the brands did not agree with it and somehow disappeared from the Indian market. Now, if you don't know, Indian market is one of the biggest markets for mobile phone sales. Now, just imagine a country that is usually associated with, I don't know what misconception, is one of the largest markets for mobile phones, right? So, honestly speaking, India has changed the mobile industry a lot. It has changed the landscape a lot. And the companies that did not come with this change died down. For example, Motorola tried, did not work, went away, made a comeback. Right? Nokia tried, went away. BlackBerry couldn't just get it to work, could not make their phones affordable, died down. OnePlus started going on the upward direction but realized soon enough they needed a price check. They came back. So, yes, the Indian economy, the Indian market has changed the smartphone industry a lot, but so has COVID. And I'll tell you why and how. So, COVID, what has done is it has boosted the online sales platform, the online market. Earlier, companies like Oppo and Vivo and iPhones, Apple, they believe that their most of the sales were coming from offline markets. So if you have observed, a person who's buying from an offline market goes there, buys it, done and dusted. A person who's buying online has too many choices, he's going to see a few videos, and these things are going to happen. So, what is the change that you think has come, right? What is the visible change? Now look at it. Oppo and Vivo. These are the companies that barely cared about their software but are now changing. They are trying to bring better software. Why? Because the competition has better software, and when you go online, people see reviews, people see videos, and if your software is not up to the mark, someone in the video will tell it. So they're changing. Apple is giving huge discounts on their website. Earlier, Apple did not even have an Indian website where people could go buy directly from Apple. But now they are available to be bought directly from Apple. And just to celebrate this launch, they gave away free AirPods with their iPhone 11, which is an amazing deal, by the way. A lot of my friends brought it. Amazing deal that was. But then you see that the landscape is changing. Moreover, due to COVID, due to the antitrust, the iPhone manufacturing has moved to India. So a lot of these things have changed, and
that is because of the Indian market and the COVID-19. Now, I'm not saying other markets haven't brought change, but look at the intensity of the change. Today, you have all the major companies providing you smartphones in all major segments. Moreover, giants like Apple are reinventing themselves in India, offering discounts, cutting prices, trying to make their phones more affordable so their reach increases. And that is all due to these two things that I talked about. If you did like the video, if you did find it useful, please press the like, share, and subscribe button. And let's get over to the Hindi version of it. तो गाइस कैसे हो? आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन मार्केट और कोविड-19 ने कैसे मोबाइल इंडस्ट्री को चेंज किया। तो पहले इंडियन मार्केट की बात करते हैं। तो हम अगर स्टार्टिंग से देखें, पहले गैलेक्सी वाई आया था इंडिया में, तो वो पहला एंड्रॉयड फ़ोन ना हो तब भी वो एक फ़ोन था जिसने एक बज़ क्रिएट किया था, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की थी। हाँ भाई, एंड्रॉयड नाम का कुछ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये जो बज़ क्रिएट हुआ, ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, उसकी वजह से आपको एक लगेगा कि सैमसंग ने एक अर्ली फुटहोल्ड लिया, सैमसंग ने एक अर्ली लिया। उस टाइम पे एक एंड्रॉयड फ़ोन आपको अफोर्ड करना थोड़ी एक बड़ी चीज़ थी। बच्चे अपने मतलब कुछ महीने महीने वेट करके बोलते थे कि पापा प्लीज़ एक एंड्रॉयड फ़ोन दिला दो, एक गैलेक्सी वाई दिला दो। मैं तो मतलब वही बोला था कि मुझे गैलेक्सी वाई चाहिए, मिला नहीं वो अलग बात है, बट जो भी है। सोनी एरिक्सन का जो फ़ोन था, जैसे मेरे पास सोनी एरिक्सन का फ़ोन था और वो उस टाइम पे काफ़ी हिट था। उसमें बहुत बढ़िया कैमरा था, एक डेडिकेटेड शटर बटन था, सब था। बट जैसे ये नई वेव आई एंड्रॉयड की, उनके फ़ोन्स गायब हो गए। अब ये जो वेव थी, इसके बाद एक वेव आई जहाँ पे आईफोन्स भी एक तरह से पॉपुलराइज होने लगे, पर वो सिर्फ रिच और एलीट के पास थे। जैसे ब्लैकबेरी था लोगों के पास जो बिजनेसमैन थे या रिच किड्स थे, उसी तरह एक आईफोन भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। बट तब भी सैमसंग रूल कर रहा था उनके फ़ोन्स के साथ, उनके कॉस्टली फ़ोन्स के साथ। और उस हिसाब से वो कॉस्टली थे, उस टाइम के हिसाब से भी वो कॉस्टली थे, और उस हिसाब से कि जो ऑफर कर रहे हैं हार्डवेयर, उस हिसाब से वो काफ़ी कॉस्टली थे। इसके बाद आए चाइनीज़ जायंट्स, पर उससे पहले एक इंडियन जायंट भी आया, माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स को तब कच्चा खिलाड़ी माना गया था, क्योंकि वो ना रास्ते पे वो जो एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं ना सेल्स वाले, उस तरह से बैठ के वो अपने एजुकेशनल एंड्रॉयड टैबलेट्स बेचते थे। धीरे धीरे उस कंपनी ने ग्रिप पकड़ी और उसके पीछे काफ़ी लावा कार्बन जैसी कंपनियां भी आई। अभी कंपनियां आके चली गई वो अलग बात है, पर इन्होंने भी एक मार्केट में चेंज लाया कि इंडिया में भी होम ग्रोन चीज़ें हो सकती है। इसके बाद एक जो मेजर प्लेयर इंडिया में आया जिसने टोटली फेस बदल दिया, वो था वन प्लस। वन प्लस ने कस्टमर्स को जो चाहिए वो ऑफ़र किया। उनके हार्डवेयर अच्छा था बट प्राइस लो थी, और वो एक्सक्लूसिव थे। तो एक मिडिल क्लास आदमी को एक एक्सक्लूसिविटी वाली फील आ रही थी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसके लिए, और उसकी वजह से वो कंपनी टोटल हिट हो गई, लोग खरीदने लगे। इसके बाद बाकी भी जो स्मार्टफोन जायंट थे दना दन करके सब आने लग गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियंस को वो ऑफर किया जो सैमसंग और एप्पल नहीं ऑफर कर रहा था, वैल्यू फॉर मनी। इंडियंस उतना मनी नहीं स्पेंड करना चाहते थे, इवन दो ये मार्केट बहुत बड़ा है स्मार्टफोन के लिए, बट उनकी स्पेंडिंग इतनी नहीं है। सो जो मेन सेक्टर्स है, हमारे सेगमेंट है, वो बजट, लो बजट, मिड बजट, ऐसे सेगमेंट्स में अभी अभी जाके ये फ्लैगशिप सेगमेंट हमारा हिट होने लगा है। बट उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंस था बजट फ़ोन्स पे या वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स पे। और यहाँ पे जो चाइनीज़ कंपनियाँ हैं, उनके पास लार्ज मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से वो कॉस्ट अपना रिड्यूस कर सकते थे, तो उनके मार्जिन कंपेरेटिवली लो रख के वो हमें फ़ोन्स बेचते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेजॉरिटी जो इंडिया है एक मास मार्केट है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टार्टेड बाइंग चाइनीज़ फ़ोन। चाइनीज़ फ़ोन बहुत लोग खरीदने लगे। अब इससे क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम आ गई कि चाइनीज़ कंपनीज का डोमिनेंस बढ़ने लगा। सैमसंग, एप्पल, ब्लैकबेरी तो ख़त्म हो गया, इन लोगों को हो गई प्रॉब्लम। तो उस टाइम से अगर आप चेंज ऑब्जर्व करोगे, सैमसंग अब हर सेगमेंट में एक फ़ोन रखता है, चाहे वो सबसे लो सेगमेंट हो चाहे वो सबसे टॉप सेगमेंट हो, सैमसंग का फ़ोन है। बट यही एक अकेला जायंट नहीं है जिसने ये सब किया है। इसके बाद आया है एप्पल। एप्पल ने इंडिया में अपना स्टोर लॉन्च किया, बट वो एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। एप्पल को अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके एप्पल का जो लोवेस्ट स्पेक्ट्रम वाला फ़ोन होता है, जो लोवेस्ट एंड का फ़ोन होता है, उसकी प्राइस कम से कम हुए जा रही है। तो मेरे हिसाब से एप्पल भी पूरा एक मार्केट कवर करने की कोशिश कर रहा है, जो एप्पल के लिए डिफ़िकल्ट है, गिवन उनका मटेरियल थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है और वो कॉस्ट कटिंग उतनी नहीं कर पाते हैं।
तब भी एप्पल ट्राई कर रहा है कि वो पूरे इंडियन मार्केट में हर सेगमेंट में आने की कोशिश कर पाए। वन प्लस उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, बट वन प्लस को वापस आना पड़ा उस सेगमेंट रेंज में। अब बात करते हैं कोविड से क्या हुआ है। कोविड से पहले तो एक ऑनलाइन मार्केट बढ़ गया है, काफ़ी लोग अब ऑनलाइन खरीदते हैं। इससे चेंज क्या है, ओप्पो वीवो जैसी कंपनी है जिन्होंने कभी अपने ओएस पे उतना ध्यान नहीं दिया, अब वो अपने ओएस पे ध्यान देने लगे। क्यों? क्योंकि लोग रिव्यूज़ पढ़ते हैं, लोग रिव्यूज़ देते हैं, और आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आप वहीं से गूगल करके आप देखते हो कि फ़ोन कैसा है क्या है, और रिव्यू में पता चलता है जब ओएस उतना अच्छा नहीं है तो वो एक कस्टमर बाय करना छोड़ देता है, जो वीवो ओप्पो के लिए डेंजरस चीज़ हो गई है। तो इसलिए अब उन्होंने भी अपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, सर्विस अपग्रेड करना, ये सब शुरू कर दिया है। इनफैक्ट एप्पल जैसी बड़ी जायंट ने इंडिया में जिसका स्टोर नहीं था ऑनलाइन, उसने अपना ऑनलाइन स्टोर खोला, लोगों को मेजर डिस्काउंट्स दिए। आईफोन 11 पे आपको वैसे ही डिस्काउंट मिल रहा था, उसके साथ एयरपॉड्स फ्री मिल रहे थे अगर आप एप्पल की वेबसाइट से लेते। तो वो इंडियन मार्केट में कोविड में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और ये जो ओप्पो वीवो एप्पल है, इनकी प्रेडोमिनेंटली ऑफलाइन शॉपर्स ज़्यादा थे, बट अब ये चेंज हो रहा है, इसके लिए उन्होंने ये चेंजेस लाए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।